guys, this is the second episode of the podcast Beyond the Peel, your journey to self transformation. So, firstly, before I move on, I do want to thank everyone for providing so much love for the first episode, for really being able to relate with it. If you are the one who has not checked it out, I highly recommend checking it out. I'm going to leave the link to that video in the description below and above as well, as that video will give you really good insight into what's really happening if you are in your 30s. So, without further ado, I am going to get right into today's episode. This episode is about personal lives. So, what do I feel in my personal life at the moment? What do you all definitely feel in your personal life? When I say personal life, it means your household, your relationships with other people, right? So, all of these things which are very personal to people around you. So, let's get started with that. And as I've been saying earlier, my motive with this podcast and this episode is that everyone who's in this age bracket should ideally be able to relate to it, because we are all sailing in the same boat. We are all 90s kids. We are in the same age range. So we have very similar experiences. When I say about personal life, the first thing that comes is, what did our household look like in general? What was our household situation back then? 80% of household. Now, obviously, whatever I say is not going to resonate with every single human being out there in their 30s, but 80% of household look like this. I'm going to paint a beautiful picture for you. I hope you go back to your times and are able to relate to what I'm saying. That time, men in the house, they were the primary breadwinners. They would go out, work, and they would be the ones bringing money home. They were earning for the family so that all the materialistic things could be bought. Women, on the other hand, they were the homemakers, which means they stayed at home. They took care of everything. Every person living in the home, the female of the house or the mother of the house, was responsible for them, for the children, for the food, for the environment within the house. Everything was women's responsibility, right? So men would usually come around 6 at that time. That time, it was mostly like government jobs, I would say. Even some people who had corporate job, there was quite a good work life balance back then. Like, people knew their boundaries on, this is the time for me to work, and this is when I should be going home and spending time with my family. So in that way, it was quite good, right? Even in nuclear families, or there were some families which were joint families, the dynamic of household looked like this. The children of the house, they definitely went to decent schools. Everybody would spend good time together. They would have time dedicated for TV. You remember watching all those serials, Ekta Kapoor serials, with everybody in the family, right? So with mother bringing food to us, or if mother is very invested in that, she would be the one who would be making everyone quiet because she wanted to concentrate on that. So beautiful childhood memories, right? So that was the dynamic at that time. Vacations at that time, they were like, icing on the cake, right? Everybody would be looking forward to vacation. There were summer vacations from school, there were those winter vacations. People would go to hill stations, everybody would go together. It was really wonderful time, right? Even going out for like dinner or for lunches, I don't remember I ever went out for lunch, because we were at school and parents would be at their office. But mostly dinner is what we would go out, and obviously on weekends, that day only Sunday. I don't remember we had off on Saturdays, right? So those lunches or those dinners were also an icing on the cake. We would really look forward to it. Those were like special dinners, because we would go out and spend really good time. So that is how the household really looked like quite simple. Everybody respected each other. People had so much love for each other. It was quite a close knit family in a way. Now that I'm talking about family, I think it's important to talk about the relationship. What did the relationship look like between both the partners, right? So if you just think about it, mother and father at that time, your parents at that time, what did the relationship look like? So, since men of the house were the breadwinners, they were the ones who were earning money. So, for some reason, I don't know, for some weird reason, they were supposed to be the decision makers of the house. You remember those conversations ki, child would ask something to the mother and they would say, "जाओ पापा से पूछो, मुझे नहीं पता, जाओ पापा से पूछो, पापा को पता है, पापा ही बताएंगे." So, you remember all those conversations. So, men of the family, they were the decision makers. Obviously, the consensus would come, everybody discussing it, but that final stamp on that particular conversation would be of father.
it was quite a patriarchal relationship back then. Obviously there was quite a lot of love, there was quite a lot of mutual respect, but people that time, both the partners that time, they had those gender roles defined, that if you're a man you have to go out and work. Like if someone said to a man, today maid is not coming, you have to do jhadu pocha, they would go crazy, they would go bonkers, right? And on the other hand, women of the house, they thought ki I am only supposed to sit at home, take care of everyone, although that's more than a full time job. I am supposed to be only doing that, and since I'm not earning money, I am inferior. So, you see, the wiring within people, within partners, was that those gender roles were very clear कि women को ये करना है, men को ये करना है. So, because men were the ones who were making money, they were the decision making authority. Nevertheless, there was a lot of respect and there was a lot of love, and the family and like both partners, they shared a good relationship, but they were very clear in their heads कि किसको क्या करना है, and they stayed in those boundaries, right? When it comes to relationships with our extended family, right? तो जो relatives होते हैं, close relatives, so उनके साथ कैसा होता था relationship, right? At that time, I remember, we used to play with all our cousins, because mostly all the cousins used to stay in the same city. तो we were there for family gathering, कोई family function है, कोई festivals है, we were together a lot of time. It was cousin relationships was quite good. Parents had good relationship with their age parents, so it was quite good, right? We knew who our cousins were. At least nowadays children don't even know that. So that was quite a good. And that time, if you remember a scenario जहाँ कुछ थोड़ा सा टिफ हो जाता था या फिर कुछ टेंशन हो जाती थी टू पीपल में, so that time we would often hear कि gents would usually say this कि हम लोग कुछ भी बोले, as a woman of the house, your responsibility is to make sure कि रिश्ता ना खराब हो, right? So you remember कुछ ऐसी ऐसी बातें होती थी wherein the woman was the one who was responsible to make sure कि रिश्ता खराब ना हो. Men can say whatever they want, they have their own viewpoint, but women are the ones who have to keep quiet. वो सह लेना है चुपचाप, और रिश्ते को बचाने के लिए they have to not say anything and just agree to what everybody is saying. And that time even that was there कि if you are the elder person of the family, you can say anything to the younger person, but younger person cannot even keep their point of view. So that was also very common dynamic that time. When it comes to relationship that our parents had with us, do you remember your relationship with your parents? Even today it's the same dynamic. Maybe थोड़ा बहुत change हो गया, 19-20 का फर्क आ गया, but mostly it's that wherein it's not too friendly, I would say. थोड़ा सा strictness थी relationship में, wherein you as a child could not talk openly to your parents. Your parents would not involve you in a lot of discussions which were related to family. So थोड़ा उस टाइप का रिलेशनशिप था पेरेंट्स और चिल्ड्रन में. Obviously there was a lot of respect. Obviously that is like the most wonderful relationship between a parent and a child, but it was like a strict one, it was a formal one. In some cases, like children used to share with their mothers, good, but in general I would say it was not very friendly or very open as it is now. So you see, that's what our childhood looked like, that's how we have seen when we were growing up. Now if I just फास्ट फॉरवर्ड और अभी आज के टाइम में आ जाते हैं, होपफुली जो मैंने अभी तक बोला उसमें कुछ आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज रिफ्रेश हो गई थी कि हाँ यार मेरा तो चाइल्डहुड ऐसा ही था. So now coming back to today, 20-30 years from that time, what do things look like? Are they same as what you saw? Now starting off with household. अभी household क्या ऐसा दिखता है जैसा पहले था? It's completely different. Nowadays, mostly children, we are living outside of our houses. We are living in a different city because we are earning. Like time इतना competitive हो गया है that we have to stay outside because we want to earn money. अगर हमारे पास अभी इतना है, हमें इतना चाहिए, इतना है तो हमें इतना चाहिए. So that hunger for money and that hunger for growth, it just never stops. So we always want one thing or the other. Previous times में we rarely heard कि कोई अपने होम टाउन से बाहर नौकरी करता था, कम होता था, राइट? सो अभी वो ऑपोजिट हो गया सिनेरियो. अभी कम लोग हैं जो होम टाउन में रहते हैं और बाहर नौकरी करने वाले लोग ज्यादा हैं. सो हाउस होल्ड सिचुएशन कैसी है? पार्टनर्स, दे आर लिविंग अवे फ्रॉम देयर फैमिली, दे आर द ओनली वंस हु आर लिविंग.
outside somewhere in the metro city wherein there is corporate jobs wherein they are able to work, both partners are earning now. तो अभी decision making जो है it's not with the male member of the house but it's with both, because both of them are earning, both of them have a say in everything related to household, with decisions related to their children, decisions related to house, car, whatever. So it's a mutual understanding that people have developed, क्योंकि now you cannot expect a woman to also work after she's come back at 8 p.m. while you have also come back at 8 p.m. but 8 बजे के बाद you sit and binge watch TV wherein women go in the kitchen and cook food. तो थोड़ा सा अभी men have also changed and the times have changed and now it's quite collaborative effort and there is that understanding between them now. So household अभी ऐसा दिख रहा है wherein they are staying away from their family. Parents को मिलने कभी कभी once in 6 months जाते हैं, once in 2-3 months जाते हैं, because you are staying away, right? Even children, they definitely have good education, they're getting good education, they're getting everything that they wanted as a child. So they have access to all the technology, they are speaking such good English जो कि हमारे time पे some people did, right? So that way household environment completely change हो गया है. And because of that the relationship between partners कैसा है, it's a little understanding is there now. No one has an upper hand, everybody is equal, everybody is taking decisions together and there is love and there is respect and all of that. Relationship with extended family कैसा हो गया, उसको बहुत drastic change आया, because we are living so far away. हमारी तरह हमारे cousins भी दूर दूर रह के everybody is working, right? तो सभी दूर दूर है, नो वन हैज़ द टाइम, किसी की छुट्टियों का टाइम ही मैच नहीं करता है, राइट? तो नो वन हैज़ द टाइम टू गेट टुगेदर, कि फैमिली गैदरिंग में आधे लोग आ जाते हैं, आधे नहीं आते, अगली बार में वो दूसरे आ जाते कोई. सो रेयरली होता है कि सबका टाइम टेबल मैच कर जाए, अनलेस यू रियली मेक एन एफर्ट कि सभी लोग उस टाइम पे अपने बच्चों की स्कूलों से छुट्टी करवा लो या अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो. सो वो रेयरली होता है. तो वो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी गैप आ गया, बिकॉज ऑफ आवर एनवायरमेंट दैट वी आर लिविंग इन, बिकॉज नोबडी हैज टाइम नाउ बिकॉज ऑफ द जॉब्स दैट यू आर डूइंग, राइट? अभी सभी बोलते हैं कि मेरे बच्चे का स्कूल है, मेरा ऑफिस है, मुझे छुट्टी नहीं है. द वे वी यूज टू प्ले विद आवर कजन्स एट दैट टाइम, बिकॉज वी वर इन द सेम सिटी और हर फंक्शन के लिए एक साथ मिल रहे हैं, आवर चिल्ड्रन डोंट इवन नो हु आवर कजन्स आर, राइट? अनलेस यू टॉक एवरी डे. सो वो थोड़ा रिलेशनशिप है. एंड जो वो एक्सपेक्टेशन थी विमेन से कि दे आर द वंस कि उनको रिलेशनशिप बना के रखना है, सो दैट हैज ऑल्सो चेंज्ड, क्योंकि अभी द टाइम्स आर दैट एवरीबडी हैज देयर ओन व्यू पॉइंट, बी इट मेन और बी इट विमेन. People now are expecting respect. If you give respect, I will give you respect. Doesn't matter if you're elder or younger. तो उसकी वजह से ही आधे रिलेशंस कट हो गए हैं. कई लोग अभी भी पास्ट में ही जी रहे हैं कि दे माइट बी एल्डर एंड दे आर सेइंग कि नहीं, मैं तेरे को ऐसे बोल रही तो तेरे को करना ही पड़ेगा. बट a lot of people have changed कि नहीं, I don't care about you, I don't have time for this. So जो extended family से relationship भी हम कंटिन्यू उनके साथ कर पा रहे हैं, जो कि जेन्युइन है, नॉट बिकॉज कि हमें करना है जैसे पहले होता था. सो वो रिलेशनशिप चेंज हो गया. हमारे बच्चों के साथ रिलेशनशिप काफ़ी चेंज हो गया है. वी ट्राई टू बी वेरी ओपन विद आवर चिल्ड्रन कि नहीं, अभी सब कुछ बात ओपनली कर सकते हैं. ऑल थैंक्स टू दिस इंटरनेट हम लोग नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं, थोड़ा वेस्टर्न कल्चर इंडियंस जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है. सो वी कीप रीडिंग ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर लाइक कि नहीं यार, अपने बच्चे को मैं इस टाइम पे सही डिस्कशन उसके साथ करूँगी, बी इट अ गर्ल और बी इट अ बॉय. सो वो रिलेशनशिप काफ़ी ओपन हो गया. वी आर नॉट एज स्ट्रिक्ट एज आवर पेरेंट्स वर, एटलीस्ट वी ट्राई टू बी नॉट एज स्ट्रिक्ट एज आवर पेरेंट्स वर. सो यू सी इन ऑल एरियाज ऑफ आवर पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ तो यही है ना, हमारी इमीडिएट फैमिली और हमारी एक्सटेंडेड फैमिली. तो हमारी पर्सनल लाइफ और हमारा करियर और मनी, ये सब कितना चेंज आ गया है इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. लाइफ दैट यू हैड व्हेन यू वर अ चाइल्ड एंड लाइफ यू आर लिविंग नाउ, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. हमारे माइंड के लिए इट्स अ ह्यूज शिफ्ट, ऑल्दो हम इतना शो नहीं करते कि इट्स अ शिफ्ट, बट हमारे माइंड के लिए वो बहुत बड़ा शिफ्ट हो जाता है. नाउ ऑफ कोर्स वी आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस चेंज. आई एम नॉट सेइंग वी आर सैड कि हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं. At a surface level we are all happy क्योंकि we have our independence, we have the money that we want to spend, we have the houses we want to live in, we are living in metro cities, we are going to malls, we are shopping every month and
वी हैव एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, हमारे पास नए से नया फ़ोन आ जाता है, नया-नया आईफ़ोन आ जाता है। तो जिस टाइप का हम लाइफ़ जीना चाहते थे व्हेन वी वर चिल्ड्रन, वी आर लिविंग दैट लाइफ़। एट अ सरफेस लेवल वी आर ऑल वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम कंटेंट, क्योंकि जो एटलीस्ट मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो बचपन में मेरे को नहीं मिली थी, नाउ आई हैव देम, आई एम हैप्पी अबाउट इट। लाइक बचपन में वी नेवर वोर ब्रांडेड क्लोथ्स, अभी वो ब्रांडेड क्लोथ्स मॉल्स में जाके देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन इंडियन। सो हमें लगता है यार सही है, ये वाला ही ब्रांड अच्छा है, यही पहनेंगे। सो व्हेन यू वियर ऑल दीज थिंग्स, मेकअप प्रोडक्ट्स आप अच्छे अच्छे यूज कर रहे हो, हैंड में आईफोन लेके घूम रहे हो, एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यू फील रियली कंटेंट, यू फील हैप्पी, यू फील एक्साइटेड। जब शॉपिंग करने जाना है, यू फील सो एक्साइटेड। बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, यू फील प्राउड कि यार मेरा बच्चा इतना इंग्लिश इतनी अच्छी बोल लेता है। जब हम छोटे थे हम तो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते थे। वी कंपेयर हमारा 5 साल का बच्चा और हम 5 साल में या 10 साल में कैसे थे, राइट? सो यू नो एट अ सर्फेस लेवल वी आर ऑल वेरी हैप्पी बिकॉज there is a change that we have experienced and it's a positive change for sure, but there is a but here. If you go beyond the peel, you know, if you remember कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं wherein you feel कि यार मेरे पास अपनी फैमिली के लिए ही टाइम नहीं है, हम लोग दोनों पार्टनर्स वर्किंग हैं, बच्चों के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते या अपने स्पाउस के लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते। मेरी पर्सनली आई एम वर्किंग टिल 10 PM इन द नाइट, तो बीच में तो बात करने का भी टाइम नहीं है, बिकॉज जो बीच में टाइम है उसमें आई एम आइदर कुकिंग, माई हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन, तो वो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो what do we feel at that time? We feel disappointed obviously, we feel self doubt कि हम क्यों ही कर रहे हैं, अगर हमारे पास अपने स्पाउस के लिए टाइम नहीं है, अगर हमारे पास बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं, तो why we are doing what we are doing, right? If we go beyond that, अगर if we think you know हम अपने पेरेंट्स से रोज एक बार बात कर लेते हैं, right? But they share everything that they want to just over a phone call. Now, yeah, do you share everything which happened in your day? So you feel कि यार पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पा रहे अच्छे से, इनफैक्ट वी आर नॉट एबल टू स्टे विद आवर पेरेंट्स हु आर ऑल्सो एजिंग। सो उस टाइम पे कैसा फील होता है? वी फील रियली सैड फ्रॉम इनसाइड, राइट? वी फील हेल्पलेस, क्योंकि यार कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं अगर छोड़ के घर चली जाऊंगी या घर चला जाऊंगा, I will still not be happy because now I am used to the lifestyle that I am living in. Now if I go home, I will not be able to survive with that money because that's the main reason I went out of the house. So we feel helpless, we feel stressed कि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा anxiety होती है, मैं ये सब सोचती हूँ। तो सबको ही छोड़ दो। If you think how much time are you taking out for yourself, अपनी personal development के लिए, अपनी health के लिए कितना टाइम निकालते हो? Like I personally have back pain all the time. What am I doing for it? Not much. I should be doing but I'm not doing much. क्यों? Because I don't have time. Similarly आपकी सिचुएशन भी मोस्टली ऐसी होगी, कुछ ऐसा हेल्थ का एस्पेक्ट होगा जो आप अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, बिकॉज ऑफ द लाइव्स दैट वी आर लिविंग इन। उस टाइम पे आपको कैसा फील होता है? यू फील कि यू नो what's the purpose of my life? You start questioning yourself, right? आप frustrate feel करते हो, आपको लगता है यार I am so exhausted, I don't even have time to think about my health. हेल्थ तो सेकेंडरी आ जाती है, बाकी चीज़ें प्राइमरी। वी गिव प्रेफरेंस टू आवर जॉब्स क्योंकि द लाइफस्टाइल दैट वी आर लिविंग इन, अगर जॉब नहीं है तो लाइफस्टाइल नहीं रहेगी, हेल्थ तो छोड़ दो, लेकिन इट शुड नॉट बी द केस। सो वो टाइम जब हमें लगता है कि यार हम तो अपने पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, then what is the point of all of these things? कभी कभी ऐसा टाइम आता है wherein you feel कि यार मैंने ना बचपन में ये चीज़ खाई थी एंड अभी ये चीज़ तो यहाँ मिलती नहीं है, इवन मैं होम टाउन में भी जाऊँ वैसी चीज़ नहीं मिलती, तो वो टाइम कहाँ गया? यू फील नॉस्टैल्जिक, यू फील कि ये क्या है यार, मतलब बचपन का टाइम बहुत अच्छा था, हमें बहुत याद आता है वो टाइम। देयर आर टाइम्स, इफ यू लुक बियॉन्ड योरसेल्फ, देयर आर टाइम्स यू फील कि यार द चाइल्डहुड दैट यू लिव्ड, योर चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू लिव दैट चाइल्डहुड, राइट? क्योंकि वो डायनेमिक ही बिल्कुल अलग थी उस टाइम पे। योर चिल्ड्रन नाउ आर in cities, they are not meeting any relatives, not meeting any cousins, grandparents are living so far away, grandparents की teachings नहीं मिल रही उनको, you hardly have time to give them teachings, homework करवा लो वही बहुत बड़ी बात है। So you feel कि your child is not getting the childhood that you had. So what do you feel? You feel concerned, you feel frustrated because of that, you feel regret कि यार कहीं मैंने गलत decision तो नहीं ले लिया। So all of these feelings that I just mentioned, these are all पार्ट ऑफ अ बिग स्पेक्ट्रम। मैंने अभी सिर्फ कुछ फीलिंग्स आइडेंटिफाई की जो मुझे फील होती है, मे बी थिंग्स विच आई हैव नॉट इवन आइडेंटिफाइड, मे बी थिंग्स विच यू फील। सो यू सी
हम लोगों की लाइफ कैसी चाइल्डहुड में थी और अभी हमारी लाइफ कैसी है, उस वजह से हमारी इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस. सो आई टेल यू द मेन रीजन ऑफ द वे यू फील, वाई यू फील द वे यू फील. क्यों आपको सैडनेस होती, क्यों आप कंटेंटमेंट होती, क्यों आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है, क्यों होता है? देयर आर टू मेन रीजंस. वन इज द चाइल्डहुड, जो कि मैं अभी तक बोल रही हूँ, क्योंकि आपने वैसा एक्सपीरियंस किया है अपने बचपन में एंड यू हैव सीन दैट, तो वो आपके लिए एक बेंचमार्क बन गया है कि ये चीज़ ऐसी होती है, मैंने ऐसी देखी है. सेकेंड इज योर पर्सनालिटी. जब वो आपके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आपकी पर्सनालिटी के साथ मिक्स कर जाते हैं, दैट रिजल्ट्स इनटू अ फीलिंग. सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई टेक एन एग्जाम्पल. जैसे आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड द स्टोरी, बट देयर वर टू ब्रदर्स. देयर फादर वाज एन अल्कोहलिक. सो घर का एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक था. ही वुड नॉट speak properly with them. He would beat their mother. There would be no money in the home. He had all the bad habits and all of that. Now one brother out of them, he said he thought and he said to himself ki I am never going to touch alcohol because I have seen the impact it has on everybody around you. I am never going to touch alcohol. What did the other brother think? Other brother said, मेरा तो बाप है ही अल्कोहलिक, तो मेरे को भी यही बनना है. लाइक ये तो जेनेटिक है, मैं जितना भी अवॉइड कर लूँ, मैं तो मेरी तो फ्यूचर ही ये हो गया, मैं आई एम तो डेस्टिन्ड फॉर दिस. So you see how both of them are feeling. Their childhood experiences are the same, but their personality, when mixed with their childhood experiences, result in the feelings because of the way that they are feeling as of now, right? तो हमारे एग्जाम्पल में अगर हमारे चिल्ड्रन को वैसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, सम माइट से अच्छा ही यार वो कौन सा अच्छा टाइम था, अभी बच्चों की लाइफ इतनी बढ़िया चल रही है, हु केयर्स. बट ऑन द अदर हैंड सम माइट से नहीं यार वो टाइम ज़्यादा अच्छा था, वो जो इनोसेंस थी उस टाइम पे, वो जो प्योरिटी थी, दैट इज़ लॉस्ट. सो क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी मिक्स हो गई, जो कि आपके थॉट्स को अफेक्ट करती है. अब आपके थॉट्स को अफेक्ट करती है तो आप वैसा फील करते हो. सो दिस इज वाई यू फील द वे यू फील. सो एक्चुअल में हो क्या रहा है फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, वो जो इक्वलाइजर ग्राफ होता है जिसमें कि अप एंड डाउन जाते हैं, राइट? सो आपके इमोशंस ऑन अ डेली बेसिस उस ग्राफ पे हैं. बहुत हैप्पी, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, सेल्फ डाउट, फियर, व्हाटएवर, वो सब इमोशंस जो हैं पूरे दिन में आपके अप एंड डाउन जाते रहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं, तो आपके इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस है. जिस वजह से क्या होता है, आपको पता नहीं है कि आपको क्या फील हो रहा है. लाइक अगर आपको कोई पूछे लाइक आर यू हैप्पी, you would think कि am I happy, because you don't know. Yes, you were happy once, but then tomorrow this happens, I will not be happy, but yeah, then again I am happy because I got a raise या whatever. तो वो इमोशंस जो हैं आपके इक्वलाइजर ग्राफ पे हैं. सो बिकॉज ऑफ विच यू फील एंग्जाइटी एंड यू आर नॉट रियली श्योर कि वॉट इज हैपनिंग विद यू. दैट इज एग्जैक्टली वॉट इज हैपनिंग विद मी, दैट इज वॉट इज हैपनिंग विद यू एज वेल, एंड आई हैव गिवन यू द रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग. There are ways you can change that. This episode is just about showing you the mirror on what's happening with you and why it is happening, why you are feeling the way you are feeling. And as I'm repeating, you are not alone. Everybody who's in this age range, तो ये midlife crisis और ये सब क्या होता है, यही होता है, wherein you don't know what you're feeling, and the reason you don't know what you're feeling is because of those, right? Because of your childhood experiences, because of your own personality. So I am going to end the video here. I hope you've got some clarity into, beyond the peel, what are your thoughts, what are your feelings, what is really happening within you, why it's happening the way it is happening, why you're feeling the way you're feeling. So with that, I'm going to end the video. I hope you are able to relate to it. I hope this video is just like showing you mirror on कि हाँ ये हो रहा है भाई, आपके साथ, हमारे साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है. So this is just like showing you that mirror. I hope you're able to relate to it. Do let me know via comments below. Otherwise, I'm going to see you all next week. Bye bye.